सवाल पूछता हूँ। राहुल जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे शो पे आने के लिए हांगकांग से। और अभी देखिए, राहुल जी कह रहे, ये गुरमीत भाई आप कह रहे थे, गुरमीत चड्ढा जी दिल्ली से, कि एफआईआईज ने इतना ज़बरदस्त माल बेचा है इस लास्ट 1 ईयर में जो उन्होंने 10 साल में खरीदा था, राइट। अब आप तो खैर एक एफआईआई कम्युनिटी को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये बिकवाली आपको लगता है कितना दिन चालू रहेगी, 2-3 महीना या उससे लंबा? क्योंकि अब तो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स का पेशेंस टेस्ट होने लगा है। तो हमने पिछले कुछ हफ्तों में देखा है कि हालांकि फ्लोज नेगेटिव हैं, बट जो इंटेंसिटी है वो काफी कम हुई है। और अभी जब तक ग्लोबली इन्फ्लेशन थोड़ा हाई रहेगी, सेंट्रल बैंक्स थोड़ा हॉकिश रहेंगे, equity as a asset class may lose kind of inflows or may have outflows. तो इंडिया भी थोड़ा impact हो गया as a market. But then for investors who have a medium-term time frame, I think this is a good time to slowly accumulate. Valuations will get attractive over the next 6 to 9 months, and जो अच्छी companies हैं, they have the ability to bounce back. So we're fairly confident that they should bounce back over a 3 to 5 year perspective. But next 3 to 6 months would be very choppy. So there is no need to immediately rush into the market. One can slowly, at every kind of a dips, 5 to 7% dips, add to high quality names. राइट राहुल, आपको लगता है कि इमर्जिंग मार्केट में भी रिडेम्पशन का केस बन रहा है? हालांकि आप तो इमर्जिंग मार्केट हेड हैं, कुछ इस तरह का डर भी है क्या? क्योंकि एक पॉइंट ये आ रहा है कि अभी तक सिर्फ डेवलप मार्केट वाले इन्वेस्टर्स ही एफआईआईज प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, इस चक्कर में पैसा जा रहा है। क्या ईएम्स के ऊपर भी कुछ आ सकता है रिडेम्पशन का प्रेशर? So emerging markets में जो redemptions ये recently आ रही हैं, this is really a function of money going out of global equities. But जैसे जैसे लगेगा कि इन्फ्लेशन थोड़ी कंट्रोल में आ रही है, और अभी करंटली फेड इज वेरी हॉकिश, but once the demand slows down, once the inflation kind of cools off, markets will get the comfort also कि policy making is not going to be very hawkish, the central banks will not take economies into recession. और उसके रहते हुए again they would be bottom fishing obviously. And what would also happen is, जैसे हमने डिस्कस किया था कि ये जो अच्छी कंपनीज हैं, ये वैल्यूएशन वाइज काफी अट्रैक्टिव रहेंगी, अर्निंग्स उतनी खराब नहीं आएंगी, तो people would realize कि emerging markets can hold on better, and that's where first the negativity on the flows will stop, and then we'll see all this bottom fishing happening through, and that's how markets should bottom over next 6 to 9 months. एब्सोल्युटली। तो राहुल, ऐसे केस में आपको कौन से सेक्टर्स पसंद आते हैं? अगले 6 महीने का आप व्यू रखें, यहाँ से कहाँ आपको वैल्यू दिखने लग गई है जो अट्रैक्टिव लगने लगे? और साथ ही अगर इन स्पेसिफिक ऑटो सेक्टर की अगर बात करें, तो आपको लगता है कि वहाँ जो सप्लाई चेन इश्यूज थे, मेजरली लाइक सेमीकंडक्टर इश्यूज, हमने अभी पीछे रेनो के ग्लोबल सीईओ को भी सुना, उन्होंने भी कहा कि कहीं ना कहीं जो चिप सेमीकंडक्टर्स की दिक्कतें हैं वो धीरे धीरे अब सॉर्ट आउट हो रही हैं। तो ये 2 चीज़ें मैं आपसे पूछना चाह रही थी राहुल। सप्लाई चेन इश्यूज की अगर बात करें तो काफी हद तक ये सप्लाई चेन इश्यूज सॉल्व हुए हैं, क्योंकि सेमीकंडक्टर्स के जो यूजर्स हैं वो स्मार्टफोन कंपनीज हैं। तो अगर हम देखें एप्पल, सैमसंग एक्सेट्रा, ये अपने वेंडर्स को बोल रहे हैं ऑर्डर कट्स के लिए। सो व्हाट इट मींस इज कि ऑटोज जहां पे सेमीज की शॉर्टेज थी वो थोड़ी सी मिटिगेट होगी, ऑटो कंपनीज विल गेट द सप्लाईज फॉर दी सेमीकंडक्टर्स एक्सेट्रा। चाइना में भी जो शंघाई लॉकडाउन हुआ था, that's eased considerably, and the economy is open. If you see US ports also, some of these semiconductors issues have been sorted out. Indian market के लिए particular risk जो रहेगा वो रहेगा oil, और that risk largely comes because ये जो Russian crude है उस पे next 4 to 5 months में थोड़ी sanctions आएंगी कि ships cannot carry, or ships would not be able to get insurance for the Russian crude. So one needs more clarity on what happens on oil. बट अगर हम ऑयल और एग्री कमोडिटीज को छोड़ दे तो बाकी सारी कमोडिटीज हैव करेक्टेड शार्पली इन लास्ट 45 डेज। एल्यूमिनियम, कॉपर, जिंक एक्सेट्रा, ये सब 20 से 30% करेक्ट हुए हैं। तो इवेंचुअली दे शुड आल्सो फीड थ्रू इन फाइनल प्रोडक्ट प्राइसेस। डिमांड इज सॉफ्टनिंग ग्लोबली, so that should ease off on inflation concerns. Sectors for the time being, for next kind of a 5 to 6 months, our portfolios would be still leaning towards defensive sectors, telecom, autos, thoda utilities वगैरह अच्छे लगते हैं, consumer staples also, rural economy should particularly stand out. And then in next 5 to 6 months, as we get confidence कि inflation is coming under check,
one would move more towards financials, one would move more towards later on towards quality industrials. बिल्कुल, तो टेलीकॉम, ऑटो, यूटिलिटी ये सभी सेक्टर पसंद आ रहे हैं और भारत के लिए ऑयल की बढ़ती कीमतें एक बड़ा रिस्क है। राहुल, आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि फिलहाल फिर जो फंड फ्लोज हो रहे हैं वो कौन कौन से एसेट क्लासेस में हो रहे हैं और कौन कौन सी ज्योग्राफीज में फंड फ्लोज देखने को मिल रहे हैं? So currently अगर हम बात करें last let's say a month or two, fund flows जो आ रहे हैं वो चाइना में आ रहे हैं, and the reason for that is basically because the Chinese market corrected way ahead of other markets last year. So Chinese market corrected sharply because there was all these worry on again the regulation on the internet companies. तो अभी Chinese companies, the Chinese government has come and said that large part of that regulation is over. We saw China also getting impacted by these COVID shutdowns. So as economies opened up, there is a reopening play coming. थोड़ा ये लोग consumption stimulus भी दे रहे हैं, so that is positive from a Chinese market perspective. So that's where we've seen markets kind of a bouncing back, the Chinese markets bouncing back. वहाँ पे थोड़ा interest आ रहा है. बाकी I think from an inflow, investors would be on sidelines. People would sit on cash for a while for next 3 to 6 months to get a better clarity. And जैसे लोगों को लगता है कि look, ये inflation is not a repeat of 1970 scenarios, is coming under control. After that, again, people will come to equities. Equities are good inflation hedge. But look, equities don't do well in periods of very high inflation. But in moderate inflation, equities are good hedge. राइट, ठीक है, बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया राहुल, आज हमसे बात करने के लिए। हांगकांग से सीधा हमसे बात कर रहे थे मिराए एसेट से। हांगकांग अपना व्यू क्लियर करते हुए कि बाजार में अभी फिलहाल कुछ और लगभग 6 महीने और आप चॉपी ट्रेड देख सकते हैं, लेकिन कई जगहों पर कई पॉकेट्स में उन्हें वैल्यू इमर्ज होती हुई दिखाई देती है, जिसकी वो क्लियरली यहाँ बात भी कर रहे थे हमसे।